This conference will now be recorded. So, welcome you all to this training session on steel wire manufacturing technology. This is a day 2 of week 2, and today's training content is, as usual, color of confidentiality. We will go through the continuous casting also. We have briefly seen it yesterday. Today, a little bit more details, and if any questions are there regarding that, then we will see various forms of cast product, that is loom, billet, slab, ingots. All these things we will learn today. And after that, we will have a brief discussion on the billet preheating in reheating furnaces. Because for making the wire rod, you have to preheat the billet. So from preheating of the billet, the wire rod process starts. So today's content is having continuous casting from the steel making, and after that, a part of wire rod making, that is billet preheating in a reheating furnace. So today we are starting the wire rod manufacturing also. So let us complete that remaining part of the steel making, that is continuous casting. We have seen till now just a quick go through iron ore and coal injection, or a natural gas. What it will form? It will form a direct reduced iron. If we have coke, limestone and iron ore, it is fed to the blast furnace to get the pig iron. Now this pig iron will go to the basic oxygen furnace for removal of the impurities and decarbonization, that is removing the carbon from the pig iron, because pig iron contains almost 3.5 to 4.5% of carbon. The steel is brittle if that much carbon is there, so you have to remove the carbon from that one. That's why the basic oxygen furnace is employed. After that, for the final chemistry, adjusting the final chemistry to the desired level, it is treated in the refining facility. There are various refining facility what we have seen: RH process, ladle furnace, AOD, BOD, vacuum degassing, that is VD. So all these things are done in the refining facility. Now the output from the ladle refining, or you can say secondary refining process, now the steel is ready to get casted. अब ये steel जो ready हो गया हमारा, we can cast it to the desired shapes, and that various shapes can be slab or thin slab, blooms and billets. Okay. Another route is that you have a DRI and the scrap. It can be melted in the electric arc furnace, which will go to again steel refining and then to the corn cast. And then we have also seen the induction type of heating, but it will be used in a very small scale. Process will be more or less similar. Now, as we are here on the continuous casting, the various products, what is made out of that? These are ingots, billets, bloom and slab, and also there is one more terminology, that is cast billet ingots. Now, whatever the terminologies, the definitions we are using here, it is as per Indian that IS standard 2831 2012. Okay, it is given in that, but in practical application, the dimensions will vary. What we have shown here as per what is given in the IS standard, IS 2831. So we will go one by one. Ingot definition is not given in IS 2831, it is from somewhere else. Basically ingot क्या होता है? आपने इसके देखे लेड जो आता है, आप अगर वायर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो यू मस्ट हैव सीन द लेड जो पीसेस आते हैं, जो आप लेड बात में डालते हैं,
What it is called actually? It's a, can anybody tell? It's nothing but a, Lead ingot. what it is? Yeah, lead ingot. People who are working in the galvanizing process, you must be getting zinc in some form. What it is actually? It's a, क्या बोलते हैं उसको फिलिप्स जी? जिंक जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? What we say that one? The zinc के जो आते हैं, तो 99% प्योर जिंक करके बोलते हैं ना। पर उसको हम क्या बोलते हैं? जिंक इनगॉट. वी कॉल इट ऑल्सो जिंक इनगॉट. तो बेसिकली स्टील या कोई भी मोल्टन मेटल जो है मेल्टन फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट यू आर कास्टिंग दैट वन टू पर्टिकुलर फॉर्म, सो इट बिकम्स अ इनगॉट, है ना. यू आर, जो जिंक के आपके पास आते हैं या लेड का आता है, इट इज नॉट दैट दे हैव मेड समथिंग एंड देन दे हैव रोल्ड एंड देन दे हैव शिफ्टेड सप्लाइड टू यू. इट इज बेसिकली एज कास्टेड. एलिमेंट्री फॉर्म में है ना सर? एलिमेंट्री है ना, कंपाउंड नहीं हो रहा है ना ये? नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट में अभी जो इनगॉट वगैरह बनेगा, इट इज नथिंग बट अ स्टील, प्योर एलिमेंट. प्योर स्टील. हाँ, या, but not only pure element, like zinc also. तो zinc pure है, तो it is zinc pure ingot है. But if you get, जहाँ पे ना क्या गैल्वा एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, ओके, सो उसमें जो होता है एल्यूमिनियम प्लस जिंक का वो अलॉय रहता है, उसका इनगॉट आता है. ओके, जिंक एंड एल्यूमिनियम की इनगॉट. तो वॉट एवर इज इन द मोल्टन फॉर्म, है ना, अगर वो ब्रास है तो ब्रास का भी इनगॉट आता है, तो इट्स अ ब्रास इनगॉट बेसिकली. It is nothing to do with the element or compound. ओके. तो मोल्टन मेटल मोल्टन कंडीशन में है कोई भी मेटल या अलॉय, देन यू आर कास्टिंग इट टू सम शेप, सो दैट इज बेसिकली इनगॉट. तो स्टील में भी वैसे होता है. तो स्टील कैन हैव इनगॉट साइजेस राइट फ्रॉम से फ्यू केजीज टू 500 टन्स ऑल्सो. बड़े बड़े इनगॉट्स भी बन सकते हैं, अप टू 500 टन का भी इनगॉट बन सकता है. सो इनगॉट बेसिकली कब यूज करते हैं? जब आपको फोर्जिंग के लिए कुछ चाहिए. तो हाउ यू विल मेक दैट वन? अगर आपको कुछ बड़ा फोर्जिंग बनाना है ना, बड़ा पिस्टन बनाना है, या जैसे शिप्स रहती है, शिप्स के बड़े बड़े फोर्ज कंपोनेंट रहते हैं, तो हाउ यू विल मेक दैट? सो यू हैव टू डू सम रफ इनगॉटिंग ना. आफ्टर दैट ओनली यू विल हीट एंड मेक टू पर्टिकुलर शेप. ओके. सो दैट इज बेसिकली इनगॉट. तो स्टील में भी जो हमारे पास लैडल में मोल्टन मेटल आया हुआ है इस कंडीशन में, है ना, यहाँ पर दिखाया नहीं है दैट इनगॉट कंडीशन हियर, बिकॉज कंटिन्यूअस कास्टिंग से इनगॉट नहीं बनता है. इट विल बी स्लैब, ब्लूम्स एंड बिलेट. ओके, इनगॉट जो रहता है वो ऑफलाइन बनता है, मोल्ड्स रखे रहेंगे वहां पर, एंड द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू दैट वन. सो इट कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस. नॉर्मली जो रहते हैं टेपर्ड, जब तक ये कंटिन्यूअस कास्टिंग की प्रोसेस नहीं थी, देन इनगॉट वेयर दी एवरीवेयर, द इनगॉटिंग इज ओनली यूज्ड. सो मोल्ड रहता है और वो क्रिएटेड मोल्ड में फिर मोल्टन मेटल डाल देते हैं. सो इट फॉर्म्स द, नाउ उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको जो प्रोसेसिंग करना है, यू कैन डू. व्हाई इट इज डन? बिकॉज यू कैन नॉट डू एनी प्रोसेसिंग ऑन द स्टील मेटल. स्टील मेटल से डायरेक्ट आप वायर रॉड थोड़ी बना सकते हो. You cannot make that one. So you have to have some intermediate product. So that is basically in the form of molten metal being solidified. तो ऐसे सॉलिडिफाई करना है कि हमको वो आगे में यूजेबल फॉर्म में रहे, हैंडल इजी कर पाए हम. लाइक इफ यू वांट टू मेक वायर रॉड, है ना, यू कैनॉट मेक बिग इनगॉट ऑफ 10 ton 20 ton and then you start rolling the wire rod, because wire rod coil are 2.5 ton 2 ton 1.5 ton. So according to that you have to do that इनलेट प्रोडक्ट है, उसके डायमेंशन उस हिसाब से रखने पड़ेंगे. तो नंबर वन इज द इनगॉट. ओके, देन देर आर अ कास्ट बिलेट इनगॉट ऑल्सो, है ना. एज पर IS 2831, the cast billet ingot also called as a pencil ingot,
and these are having the cross sectional area not more than 200 millimeter square. It means that the for example it can be of 50 millimeter by 40 millimeter, okay, और 45 millimeter by 45 millimeter के छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर अगर है ना, so in that case it will be 40 by 50 maximum, so it will become 200 millimeter square. And why it is used, it can be in the form of rounds also, cross section can be square or it can be round also. और जब वो आपके पास बन गया, then after that you can directly roll it into the product which is required by the customer. तो बेसिकली जो स्मॉल, जैसे अगर आपको ने क्या छोटे छोटे बार मिले और आपको बार बनाने हैं इन पर्टिकुलर साइज, तो पीपल कैन हैव द पेंसिल इन गॉट एंड फ्रॉम दैट दे कैन रोल इट टू द रिक्वायर्ड dimension. Okay, then comes the billet. Now billet is what we are interested in because wire rod is produced from the billet, wire is produced from the wire rod and wire rod is produced from the billet. Now wire rod we are not making it from the ingot or the cast billet ingot. Somebody, okay, so wire rod is produced from the billet. So normally as per the definition given in that IS 2831, it is said that it can be of, it is basically a semi-finished product and it can be having a dimension not more than 125 by 125 mm in cross section. This is what definition is given. But when we are saying that with the help of continuous casting when we are doing, it can be up to 200 by 200 millimeter also. There are mills who are producing the billets with 130 by 130, 150 by 150 or 165 by 165 dimensions. Means 165 mm by 165 mm के square cross sections रहेंगे. And what will be the length of that one? The length will be around 12 meters. Clear hai? Because billet here, what they are saying, billet can be manufactured from the ingot also. If they do the forging to particular size, you can get a billet of that size. But here we are talking about a continuous casting. Continuous casting में जो actual practically companies में जो होता है, they are having the capacities up to 200 millimeter, means 200 millimeter by 200 millimeter का square बनेगा, and the length will be around 12 meters. Now the wire rod what you get is made from one billet, one wire rod coil. It is not like you cannot make two billet into one wire rod coil. One billet can be split to two different wire rod coils definitely, because you can cut it anywhere, wire rod. But if you want to get 2 ton of coil, you must have a billet of 2.1 ton or something, because 100% yield is not there. Some scrap generation will be there, some end cutting will be there. That's why you need to have a 2 ton or 2.15 to 2.1 ton of the billet size. The mills which are producing 2.4 ton of coil or 2.48 ton of coil, मीन्स 2500 किलो तक की भी कॉइल बनती है, they require a billet of approximate 2.55 ton or 2.6 ton. अभी आप बताइए मुझे, अगर आपके पास बिलेट है with the size of 150 by 150 millimeter and 12 meters long, उसका वेट कितना हो जाएगा बिलेट का? बिलेट आपको साइज समझ में आ गई, बिलेट कैसे रहता है? लाइक दिस वन, ये लॉन्ग रहेगा ऐसा, है ना? Is having a cross sectional area and it's a like a square cross sectional area and long one. Let me see next slide, there is a photo like this one. ये आपको दिख रहा है अभी, दिस इज बिलेट एंड दिस इज बेसिकली ब्लूम. सो ये जो बिलेट है, आप मुझे बताओगे इसका वेट कितना आएगा? 150 बाय 150 मिलीमीटर का एंड 12 मीटर लॉन्ग. व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बिलेट? स्टील बिलेट बेसिकली, because if it is a zinc billet, weight will be different. Lead billet, zinc will be different. That depends on the density.
So can somebody quickly calculate? कैसे निकालोगे पहले तो? कैलकुलेट कर रहे हैं ना? कौन कैलकुलेट कर रहा है, थोड़ा मुझे बताइए. ओके, सम मैसेज हैज कम. 270 टन, 270 टन का बिलेट आप कैसे, एक बिलेट रहेगा वो, तो यू कैनॉट मेक 270 टन ऑफ वायर रॉड कॉइल. शुभम, how you calculated, basically what is the say principle you are used for calculating the mass of this one? Yeah, so 150 into 150 is millimeter, 150 is millimeter and 12 is meter. So what is the cross sectional area? Now it's okay. Saurabh the Great. 2.119 ton or 2119 kg. So basically you have to get the volume and then multiply it by density. Yes, Saurabh. नो सर, वो अनम्यूट हो गया था सर गलती से. Okay, no issue. So Saurabh has given an answer of 2.119 ton. That is correct. Okay, how will you calculate? You have to first take the volume. So that volume will be 150 or 0.15 into 0.15 because it's in the meter. So 0.15 into 0.15 into, that is the cross section area, and into the length, that is 12. So you will get the volume. Now the density of the steel is 7.85 or 7.86, different it comes, but you can take anything like 7.85 you can take. So 7.85 grams per centimeter cube. Here we have in meter cube. So you have to change that one. Or you can say 7860 kg per meter cube. You can say that. So अगर आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी लीजिए, या फिर कन्वर्ट द वॉल्यूम टू द सेंटीमीटर क्यूब. So the answer is 2.119 ton. Now the mills which are having a coil weight of around 2 ton, जैसे टाटा स्टील की जो कॉइल आती है उनका वेट है अराउंड 2.119 टन. या फिर जो छोटी मिल्स है, जैसे इंदौर में जो टाटा स्टील का छोटा प्लांट है, इंदौर स्टील का जो प्लांट उन्होंने आई थिंक ये किया था, टेक ओवर किया था, तो उस प्लांट में 1 टन की कॉइल बनती है. व्हाई? बिकॉज दैट दे डोंट हैव दैट मच लेंथ फॉर द रफिंग मिल और प्रीहीटिंग फर्नेस. तो वो क्या करते हैं, 12 मीटर को फिर कट करते हैं 6 मीटर में बिलेट्स को. दे यूज ओनली हाफ द बिलेट. दैट्स व्हाई द कॉइल वेट इज ओनली 1 टन. So basically the size of the billet you have to define as per the requirement of the wire rod coil. तो जो इंटीग्रेटेड प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो बिलेट प्रोडक्शन है उसी हिसाब से करते हैं. लेंथ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज जैसे हमने कल प्रोसेस में देखा था दैट लेंथ इज कट विद द हेल्प ऑफ टॉर्च. ये तो कंटिन्यूअस कास्टिंग है. सो इंस्टेड ऑफ 12 यू कैन मेक 15 मीटर ऑल्सो, 20 मीटर ऑल्सो. बट what the problem you will face, अगर आप 20 मीटर लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगा आपको? You will face the problem of, अगर वो रेटिंग फर्नेस में जाएगा तो that reheating furnace has to be that big to handle that much length of the billets. So normally क्या करते हैं, जैसे 165 by 165. Now somebody else can tell me if it is 165 by 165 and 12 meter long, what is the weight of the billet? Somebody please, 165
millimeter into 165 millimeter, and length is 12 meter. Can somebody quickly? I already told you the density. You have to just calculate the volume. Volume into density, you will get the weight. I calculated. फिलिप जी, अपने पास कॉइल का जो वेट आता है वायर रॉड कॉइल का, वो कितना टन आता है? जेएसपीएल का 2.5 टन आते सर, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल. Now you tell me whether you can produce that 2.5 ton coil using this 150 by 150 and 12 meter long billet. No. Because the weight of the billet is only 2.11 and 10. Now what is the weight of 165 millimeter by 165 millimeter into 12 millimeter of length billet? What is the weight of that one? Basically, this is, you will understand that, okay, what is the billet size they might be using. सौरभ कैलकुलेट कर लिया? करो कोई तो भी क्विकली करो. लेट अस मूव. 165 वाला है क्या? 165? हाँ 165. यस, शुभम ने कैलकुलेट कर लिया 2.56. 2.5 2.56 2.56 करेक्ट आंसर है. बाकी लोग भी प्लीज कैलकुलेट. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी प्लीज आस्क कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड. मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर दी अंडरस्टैंडिंग. यस नियाल करेक्ट. 2.6 टन राउंड फिगर. इफ यू डू दैट वन, दैट इज अ 2.6 टन. किसी को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आस्क कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट इंसर्टिंग अ स्लाइड टू शो यू द स्टेप्स, है ना. इस बेसिकली अ क्यूब, है ना. इट्स लाइक अ क्यूब बट ऑफ सच अ साइज, है ना. बिलेट जो होता है इट इज नथिंग बट लाइक अ क्यूब. इस तरह से बिलेट है ना. अभी इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस वन, so mass will be basically you have to do volume into density. Now what is the density of steel? You take 7.85 grams per 7.85 gram per centimeter cube. Okay, this is the density of steel. Now how we will calculate the volume of billet? Volume is equal to, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका, दैट इज जो उसकी width है, and you can say thickness, and multiplied by the length. So what is the length I given you? 165 mm into 165 mm into 12 meters. That you have to make all the units same. So it will be one. You can take centimeter, so you can directly use 7.85. So 16.5 centimeter into 16.5 centimeter into 12 meter equals to 1200 centimeters. So what is the answer? The volume is 326700 is the volume, that is in centimeter cube. Now you multiply it with density. So 326700 into 7.85 equals to 2564
595 grams actually. That will be 2564 kgs divided by 1000, or you can say 2.564 ton. So this is how you calculated. It is 2.564 ton of billet. Now considering that approximately, for example, there will be some losses, scrap generation will be there in the shearing process, end shearing. So from 2.564 ton, approximately 2.45 ton or 2.48 ton of weight of the wire rod coil can be produced. So if you know that they are using around 12 meter of length of the billet, then the cross sectional will be approximately 165 by 165 millimeter. Okay. So as per that IS standard, it is given maximum this one, but practically people are using more than that also. So we have to see the theory and the practicality also. Clear? Because IS standard के हिसाब से बोला गया है उतना, doesn't mean कि आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, है ना? वो तो बिलेट कोई बेचेगा एंड उनको अगर वो एज पर 2831 स्टैंडर्ड का मार्किंग होना, तो उनको उस केस में जाना पड़ेगा. उसमें नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए दे डोंट नीड कि आपका बिलेट यही होना चाहिए. ओके. नाउ कमिंग टू द ब्लूम, है ना? ब्लूम सेम ही प्रोडक्ट रहता है, सेम लाइक बिलेट, बट इस इन अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नॉर्मली, है ना? स्क्वायर भी रहता है और इट कैन बी रेक्टेंगुलर ऑल्सो. एंड उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इट इज मोर देन बिलेट. नॉर्मली अगर आपको कुछ शीट्स बनानी है उसके लिए भी यूज करते हैं, फोर्जिंग के लिए वगैरह भी उसको यूज करते हैं. सो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहता है उसका. एंड इट कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द इनगॉट्स. जैसे इनगॉट है तो इनगॉट से भी ब्लूम बना सकते हैं इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. बट फॉर आवर इंटरेस्ट we have to concentrate on the billets basically, है ना? For the wire rod manufacturing billets are used, so we will focus on this part. And then lastly there are the slabs. Slab means basically आपने जो शीट्स देखी होगी, HR शीट, CR शीट, that is hot rolled or cold rolled sheets, वो किससे बनेगी? You cannot make it from the billet, so it will be made from the slab. ओके. एंड ब्लूम से क्या होता है, अगर आपको बड़ी थिकनेस की शीट्स चाहिए, शीट्स या ऐसे पोर्शन चाहिए हमको रेक्टेंगुलर फ्लैट, तो ब्लूम से बना के वो आगे में दे सकते हैं. ठीक. सो दीज आर द वेरियस प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द मोल्टन स्टील, एंड देन इट इज यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. लाइक फोर्जिंग है तो फोर्जिंग में इनगॉट्स या फिर जो पेंसिल इनगॉट्स है या ब्लूम्स है वो जा सकते हैं फोर्जिंग में. Sir, could you please explain slab one more time, please? ओके. स्लैब इज नथिंग बट लाइक आई विल शो यू द पिक्चर बेसिकली. जो हाँ यहाँ पे देखिए स्लैब, द प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूअस कास्टिंग है. तो आप देखिए स्लैब कैसे है, इट इज हैविंग अ मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ज्यादा फ्लैट है वो, तो उसका जो रेशियो रहता है 1:1 रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी लेंथ इज फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, देन द हाइट विल नॉट बी मोर देन 0.33 मीटर और 330 सेंटीमीटर. तो दैट इज कॉल्ड स्लैब. तो ये स्लैब इस तरह से रहता है. ब्लूम्स और बिलेट जो रहते हैं, ब्लूम्स रेक्टेंगुलर प्लस स्क्वायर भी क्रॉस सेक्शन रहते हैं. बिलेट्स आर स्क्वायर ओनली, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ना. बट स्लैब यू कैन सी इट्स अ फ्लैट बेसिकली. इट हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, बट इट इज द width to length, length to width ratio or width to length ratio is higher, you can say. It is used for making the sheets. जो कोल्ड रोल शीट्स आती है, हॉट रोल शीट्स आती है ना, जैसे हम इस पे शॉप फ्लोर पे डालने के लिए जो शीट्स यूज करते हैं, जो हमारी रूफिंग की शीट्स होती है, इट इज अ नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ
made from the slabs or thin slabs. थिन स्लैब कब यूज करेंगे? जब रूफिंग शीट्स होती है वो एकदम ही शॉर्ट इसकी रहती है, थिकनेस की, वेरी स्मॉल थिकनेस, तो वो किससे बनेगा? इट विल बी मेड फ्रॉम द थिन स्लैब. एंड जो बड़ी शीट्स रहती है, जैसे 12 मिलीमीटर की आपकी शीट है, तो वेयर फ्रॉम इट दे विल मेक इट फ्रॉम दी थिकर स्लैब. जो हम यूज करते हैं ना शीट्स फॉर दी, इसके लिए हमारे फ्लोर पे डालने के लिए, या फिर कोई मशीन का पार्ट बनाने के लिए जो भी शीट्स यूज करते हैं, 10 मिलीमीटर, 12, 16, 20, 25 मिलीमीटर की जो शीट्स आती है, ऑल दीज आर मेड फ्रॉम द स्लैब. क्लियर है गौरव, स्लैब कैसे रहता है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? It is basically a flat product. So it will be used for making the flat product, bloom, billets, for forging also, but billets will be used for the long products, making the long product, like a wire rod or bars, rebars, all these things. जैसे जिंदाल स्टील है ना, उनकी वेबसाइट है, वहां पे आप जाके देखोगे, सो यू विल सी दी क्रॉस सेक्शंस व्हाट दे ऑफर, है ना. मींस दे आर सेलिंग ऑल्सो, दे आर सेलिंग द बिलेट्स ऑल्सो इन द मार्केट. लो कार्बन बिलेट जो टीएमटी सरिया वाले वगैरह जो रहते हैं, बहुत सारे लोग, छोटी छोटी कंपनीज है, तो दे टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड, बिलेट्स बाहर से लेते हैं, एंड दे जस्ट डू द रोलिंग. बिकॉज बिलेट के लिए क्या लगता है आपको? स्टील, मोल्टन स्टील के क्या लगेगा? फिर बीओएस लगेगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगेगा, या फिर इंडक्शन फर्नेस लगेगा. So this is a huge investment. So people will do only the rolling and they buy the billets from the market. Same as the wire making person is not having a wire rod mill, because putting a wire rod mill is a big investment. Also the volume requirement will be much more. Wire उतना बनाना पड़ेगा हमको. The wire which is produced in a total month, that much steel is being produced in a single day or 2 days, depending on the capacity. तो जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस वाले लोग रहते हैं, दे बाय द बिलेट फ्रॉम द मार्केट. तो जिंदा स्टील की वेबसाइट में यू कैन सी दिस वन, लाइक दे हैव 130 into 130 also, 115 into 150, 116 to 160, and length can be from 6 to 12 meters. Okay, now we will go to the continuous casting, how the billets are made. Yesterday we have already seen this one, but again quickly we will go through that. कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको, बट स्टिल, एंड वी विल हैव वन वीडियो ऑल्सो. वन वीडियो इज लॉन्ग, सो आई विल जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दैट वन. जैसे कल मैंने बताया था, द लैडल फर्नेस में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन द लैडल फर्नेस? प्लीज समबडी, व्हाट वी डू इन द लैडल फर्नेस? Please tell somebody, please, what we do in the ladle furnace. Yesterday we learned it was focused completely on the ladle furnace, vacuum degassing, all these things, refining. So what we do in the ladle furnace now? Gaurav? Yeah. Yes, sir. So ladle furnace, there are 3 electrodes dipped into the molten cast iron. Yeah, molten metal. Yeah. What actually molten you are metal. doing there? You are doing what you are doing actually. What Sir, process you are carrying out? सर मोल्टन स्टील डालते हैं और फिर आर्गोन गैस के थ्रू जो फ्लक्स का प्रॉपर कांटेक्ट करते हैं ना सर, मतलब. Yeah. So basically we are refining the steel and adjusting the chemistry. If anybody asks you what you are doing, yeah, Kumar. So the 3 graphite electrodes provide heat, sir. Yeah, that provides the heat, because there is nothing, no oxygen blowing is there, so there is no heat generation. So you have to generate the heat using the oxygen in the ladle furnace. Okay. And if anybody asks you what you are doing in the, yeah.
It is also covered by a layer of desulfurizing slats, sir. Yes. No, basically, it is a cleaning or refining process and adjusting the chemistry of the steel. Clear? So if anybody asks you what you are doing in the VD vacuum degassing, or what you are doing in the ladle furnace, or what you are doing in the RH furnace, so basically you have to tell it is a secondary refining. We are चार चीजें मैंने बताई थी, सल्फर को रिमूव करना है, आपको कार्बन को अगर रिड्यूस करना है तो गैसेस को रिमूव करना है, एंड ऑक्साइड इंक्लूजन्स को रिमूव करना है. And for that, different processes are followed. That is what you have to tell if somebody asks. So basically, ये ladle में जो material आया हुआ है, it is already the steel with the final chemistry what you have. तो उसमें दो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, एक से जाता है बॉटम साइड से इन द टन डिश, है ना. टन डिश विल एक्ट एज अ रिजर्वायर. Now a common sense question, what will happen if there is no ton dish? You will directly do it from the ladle. What will happen? अगर ton dish नहीं है and you are doing it from the ladle, what will happen? सर प्रॉपर अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं होगा ना मटेरियल का. Yes. एक साथ मतलब when you are changing, then there will be no supply. Correct. So आपको either it's a continuous casting, तो क्या करोगे फिर आप, either आपको स्पीड एकदम स्लो कर देना पड़ेगा, या फिर कुछ भी करोगे तो there will be a separation will be there for some time. So that will have impact on the feasibility, because उसमें क्या होगा, continuous stream नहीं रहेगा, तो जो मटेरियल आगे चला गया तो उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, इसका ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, so you will not get the homogeneity. So ton dish is basically there to act as a reservoir during the switching of the ladle. तो जो ladle refining से आता है, तो ladle refining भी एक नहीं रहता है ना, there are number of ladles, because इसमें भी refractory lining रहती है. ओके, सो refractory lining को फिर आपको क्या करना पड़ता है, refractory lining को रिपेयर भी करना पड़ता है. ओके, कुछ मैकेनिज्म रहते हैं, उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो देयर विल बी नंबर ऑफ लैडल्स विल बी देयर. और सेकंडली, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इफ दिस मटेरियल there is some problem in the mill and you already have number of ladders filled with the material, what they will do, they have to pour it into some mold. So वहां पे भी ingot बन जाते हैं, and again either they will cut it and use for the cooling of the furnace in the melting process, or it can be sold outside also. बहुत बार ऐसा होता है मिल में, because of some issue this continuous casting mill doesn't continue, it stops. So what will happen to the metal which is there, they have to just put it into some molds, big molds. Okay, and there is a powder filler, basically it acts as a lubrication system here. And mold oscillator, I will show you the video, there you will understand clearly. So that mold oscillator is basically to have the proper feeding of the material. जो मटेरियल फीड हुआ है ना, तो प्रॉपरली उसके अंदर कोई गैस के बबल्स नहीं आ जाए, उसके लिए वो रहता है ना, तो उसमें कुछ ऐसे वॉइड्स नहीं तैयार हो जाए, so that's why it is shaker is there, like it is called mold oscillator. And आप देखोगे that जो उसका ये है नीचे से बॉटम जो रहता है ना, इट इज कंप्लीटली सील्ड. ऐसा नहीं है कि टॉप से पोर कर रहे हैं और एयर के कांटेक्ट में आके वो टन डिश में जा रहा है, नो, है ना, इट विल नॉट बी इन द टन डिश. दैट पाइप विल बी रिफ्रैक्टरी, जो पाइप रहता है ना, वो कंप्लीटली डीप रहता है मटेरियल में, मोल्टन मटेरियल में. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विल गेट अगेन एब्सॉर्ब्ड. सो आप अगर देखोगे यहाँ पर, इट्स डिप्ड इनटू द लैडर, दिस वन टन डिश, एंड यहाँ से भी जो जा रहा है टन डिश से यहाँ तक, दैट विल बी ऑल्सो बी क्लोज लूप, नॉट इन दी ओपन. Otherwise gases will get
entrapped. Now there will be rollers. अभी आप बताइए how the first part will come down. सबसे पहले कैसे बाहर आएगा? क्योंकि एक बार चालू हो गया तो ठीक है, आफ्टर द रोलर्स इट विल पुल दैट वन. सो इनिशियली क्या होता है, एक डमी कास्टर रहता है और डमी अंदर जाता है एंड इट विल फॉर्म दैट बॉन्डिंग विद द मोल्टन मेटल. तो मोल्टन मेटल और उसके साथ बॉन्ड होता है तैयार एंड उसको एक बार ये हो गया, स्टिक हो गया, तो दैट डमी विल कम लाइक दिस वन. और आने मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो डमी निकल जाता है एंड वंस इट इज देयर तो फिर रोलर्स है, रोलर्स कंटिन्यूअस उसको लेते जाएंगे आगे. सर हेलो. यस या सर वो विस्कोसिटी लेवल कैसे चेक करेंगे? मतलब वो मोल्ड से जब नीचे आ रहा है मटेरियल मेरा, हाँ हाँ हाँ. तो कैसे हम लोग मतलब इंश्योर कर पाएंगे कि वो मतलब सॉलिड रहेगा, तभी तो वो रोलर के बीच में चल पाएगा. तो उसी के लिए तो जो सिस्टम बना हुआ है ना कि वहाँ पे कूलिंग दिया हुआ है. कल मैंने आपको दिखाया था ना, दिस इज ऑल कूलिंग. स्प्रे कूलिंग हो रहा है यहाँ पर, वाटर कूलिंग. ये देखो, ये डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा. हियर यू हैव अ टन डिश, ये जैसे मैंने बताया था, इट इज सबमर्ज एंट्री नोजल. आफ्टर दैट देयर इज अ मोल्ड एक्चुअली, है ना. अब ये मोल्ड की जो लेंथ वगैरह है इसी तरह से बनाया जाता है कि यहाँ से जैसे आता है ना, यहाँ से चालू हो जाता है स्प्रे, वाटर स्प्रे चालू है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर वाटर शुरू हो गया है, वाटर स्प्रेइंग. तो उसकी क्रश जो रहती है ना, क्रश सॉलिडिफाई हो जाती है. ये यहाँ से जब निकला है ना, सो इट इज सॉलिडिफाइड ऑलरेडी. कौन सा पोर्शन आपका? साइड का. साइड का, ओके. बट इनसाइड अभी भी लिक्विड है. देखिए आप कहाँ तक लिक्विड रहेगा वो, ऑलमोस्ट जब तक वो स्ट्रेट नहीं होता है ना, वहां तक उसका जो लिक्विड है सेंटर में, वहां तक है. दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ मेटलर्जिकल लेंथ. यहाँ तक मेटलर्जिकल लेंथ है. मेटलर्जिकल लेंथ मीन्स यहाँ तक थोड़ा भी मटेरियल है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ना. सो मेटलर्जिकल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फिर यहाँ से शुरू होता है जब सॉलिडिफाई हो गया ना पूरा. यहाँ से सॉलिडिफाई हुआ है, देखो आप. एंड आफ्टर दैट यू कैन, देयर इज नो स्प्रे कूलिंग आफ्टर दैट. वंस इट इज कोल्ड देयर इज नो स्प्रे कूलिंग. स्प्रे कूलिंग कहाँ तक है? यहाँ तक है. तो बेसिकली ये जो मोल्ड से जब निकलता है ना, और ये मोल्ड भी वाटर कूल रहता है. मोल्ड भी जो रहते हैं ना, वो भी वाटर कूल रहते हैं, इसलिए उसकी जो वॉल्स है बिलेट्स की, तो दैट विल गेट सॉलिडिफाइड. सेंटर में अभी भी लिक्विड मटेरियल रहेगा ही रहेगा. एंड उसके बाद रोलर्स चालू हो गए यहाँ से. सो रोलर्स विल पुल दैट वन कंटिन्यूअसली, सभी के सभी रोलर. सर ये जो मोल्टन स्टील है, मोल्टन स्टील का अगर कंपोजिशन कुछ भी चेंज करते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? मतलब मोल्ड का जो लेंथ है वो मतलब वेरी कर सकता है क्या? नहीं, मोल्ड का लेंथ वेरी नहीं करेंगे. व्हाट यू कैन वेरी इज द टेम्परेचर at the entry side and you can adjust the rolling speed, that continuous casting speed. ओके. है ना, कंटिन्यूस कास्टिंग की स्पीड इज इन योर हैंड. मोल्ड लेंथ आपके हाथ में नहीं ना, वो एक बार बन गया वहां पर. एंड डेफिनेटली आप जब वो करते हो तो आप बताओगे ना कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट से लेके ये प्रोडक्ट बनाना है. आई वांट टू मेक फ्रॉम 0.1 कार्बन अप टू 0.8 कार्बन. सो अकॉर्डिंग टू दैट ही तो डिजाइन होता है. ओके ओके. एंड फिर आप कर सकते हो उसकी स्पीड जो नहीं क्या 1 मीटर पर मिनट से लेके 5 मीटर पर मिनट तक भी आप वेरी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी मटेरियल टू बी रोल्ड एंड अवॉइडिंग एनी डिफेक्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ द हायर स्पीड. और जैसे और ऑक्सीजन की फ्लेम रहती है या फिर टॉर्च रहता है अपना, वो भी ऑटोमेटिक रहता है. कहीं कहीं पे मैनुअल भी लोग रहते हैं बट नॉर्मली ऑटोमेटिक ही रहता है बिकॉज इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर जोन. So, हाँ, so how many rollers would be there in the continuous casting process? देखो अगेन डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन हाउ मच दैट दिस वन इज देयर. बट नॉर्मली जैसे आप देख सकते हो फिगर में भी कि अराउंड 10 से 12 सेट ऑफ रोलर्स विल बी देयर. सेट मीन्स 2 रोलर का एक सेट. सो 10 to 12 नंबर ऑफ रोलर्स विल बी देयर. Okay, okay.
सर एक और क्वेश्चन है। अब ये जो मतलब जैसे जो कूलिंग प्रोसेस हो रहा है ना, तो अंदर का मेटल तो मतलब हमारा तो एम क्या रहेगा कि ये सारा ही मेटल मतलब एकदम कूल हो जाए, मतलब कभी नहीं होगा एक ना, बार नो में ही अपने कूल हो जाए। नहीं होगा ना, व्हाई इट विल बी, व्हाई वी शुड थिंक ऑफ दैट एक साथ ही कूल हो जाए। नहीं नहीं, मतलब फिर वो प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हो सकती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो आपका कूलिंग है ना, यू आर नॉट डूइंग एनी दिस वन, आपका वो सिर्फ कूलिंग है। तो जो मटेरियल की जो ये है, ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे वो उसमें से एलिमेंट कहीं इधर उधर चले जाएंगे, इट्स एक्चुअली अलॉय है ना। हम्म। तो कार्बन वगैरह सब डिजोल्व है, इट्स डिजोल्व इन दैट वन। ये नहीं है कि ये हो जाएगा तो निकलना चालू हो जाएंगे वहां से, अच्छा। है ना। और सर इसमें भी लेवल ऑफ इम्प्योरिटी तो होगा ही ना, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि एलिमिनेट हो जाए? नहीं रहेगा ना। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपका अगर एंड एंड में जो आता है ना, कभी कभी हम्म। हम्म। यहाँ पे इम्प्योरिटीज कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जा रहा है, आपने जो स्टील ऊपर से डाला हुआ है, तो इम्प्योरिटीज हम्म। क्यों आएगी इसमें? नाउ इट्स द फाइनल प्रोडक्ट, इससे जो बनेगा वायर रॉड बनेगा आपका, उसके बाद आप रिफाइन थोड़ी कर सकते हो इम्प्योरिटीज है तो। हाँ, आपके मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ सकते हैं इसमें, जैसे पोरोसिटी आ गया, स्केल आ गया। हम्म। इसके लिए फिर क्या होता है आगे जाके, देर विल बी अ ग्राइंडिंग प्रोसेस, इसका जो सरफेस डिफेक्ट्स है ना, वो रिमूव करने के लिए ग्राइंडिंग होता है, बिलेट ओके। ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं। वाटर वाटर कूलिंग मीडिया इज वाटर, शुभम। So, या so but no, practically speaking, there are some type of impurities present in the wire rod, like you can say magnesium, chromium, sulfur, no, silicon. that we not call chromium now. हाँ, वो तो रहेगा ही रहेगा ना, you cannot completely remove that one. Definitely अगर सल्फर जैसे मैंने कल बताया था, if you do that desulfurization, you can get even 0.0002% also हाँ, of sulfur. yes, sir. Okay, but now that depends on what is your requirement, because there is technology that can give you very low amount of this thing, but it will have the cost also, na. Yes, sir. So are you ready to pay for that one? If you are able to get the required properties with around 0.15, 0.015 or 0.02% of sulfur, you will use that one, Yes, sir. है ना। So वो तो रहना ही है, 100% you cannot remove impurities in the sense जो फाइनल कंपोजिशन, मैंने क्या बताया था कि वॉट एवर द फाइनल कंपोजिशन वी वांट इन दैट वन, कार्बन मैंगनीज 0.3 to 0.9% or 0.3 to 0.6%, silicon 0.15 to 0.35%, sulfur maximum 0.03%, phosphorus maximum 0.03%. This is I am telling for the high carbon wire rod for wire applications. Okay. So this, and then trace element which should not be more than 0.3% total. Yes, sir. Right. Okay. Now when this starts, है ना, जैसे एक स्लैब कास्टर है, जो तो आपने पूछा था ना गौरव, ये दिस कैन बी अ स्लैब कास्टर ऑल्सो। इसमें देखिए आप कैसे दिख रहा है आपको, इट्स अ फ्लैट, यू कैन सी द फ्लैट यहाँ हेलो पर। या सर, अपन वाटर कूल करते हैं सर, तो उसमें प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं होता क्या सर? नहीं होता है ना, सबका डाउट वही रहता है, मेरा भी डाउट वही था जब मैंने पहली बार इसमें गया रोलिंग मिल में। तो ये तो यहाँ पर है, रोलिंग मिल भी जब इससे आता है ना अपने रीहीटिंग फर्नेस से, सो हाँ। रीहीटिंग फर्नेस से निकलने के बाद उसको हाई प्रेशर वाटर जेट से उसकी स्केल निकालते हैं। तो मेरा यही डाउट था, बोला आप इसको पानी में ठंडा कर रहे हो तो इट विल फॉर्म दी मार्टेनसाइट। और होता क्या है ना, मार्टेनसाइट बनने के लिए आपको उतना कूलिंग टेम्परेचर पे जाने को ना, द बिलेट शुड कम टू दैट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो आप सोचो 160 बाय 165 स्क्वायर मिलीमीटर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ओके, सो आप जो पानी मारते हो ना कंप्लीटली इवापोरेट हो जाता है।
वो जो सरफेस का टेम्परेचर वहां तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि नाउ यू आर इन द दैट टेम्परेचर जोन अबव, है ना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग टेम्परेचर रहता है वहां पर। सो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ चालू होगा, अगर इफ इट इज अ 0.8% कार्बन, हम टीटीटी डायग्राम देखेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट विल स्टार्ट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर theoretical of 727 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये 727 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है फॉर 0.8% कार्बन, और जैसे जैसे कार्बन कम होते जाता है दैट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर इज हायर। फॉर एग्जांपल, अगर वो 0.1% कार्बन है तो अराउंड 900 के आसपास के नीचे जब टेम्परेचर जाएगा ना, तब आपको फेज मिलना चालू हो जाती है। ओके, यू विल हैव ऑस्टेनाइट एंड अल्फा फेराइट हियर, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरा ऑस्टेनाइट रहता है। तो आप क्या है, जब उसको हम पानी डाल रहे हैं ना, तब भी उसका टेम्परेचर उतना ही है, वो 1200 से वो एकदम 900 नहीं हो जाता है ना। डेफिनेटली अगर आपने वो पहले जो अपना बिलेट है उसको उठा के पानी में डाल दिया 10 मिनट के लिए, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब हम स्प्रे कर रहे हैं, एट दैट टाइम टेम्परेचर इज नॉट ड्रॉपिंग टू दैट क्रिटिकल लेवल। इसलिए आप देखो जो स्प्रे नोजल मैंने दिखाए थे, इट इज नॉट कि वो कूलिंग होने के बाद, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद, यह है क्या वहां पर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे स्प्रे दिए है कि इन्होंने? नहीं सर। दे आर नॉट गिवन देयर। हाँ, क्योंकि एक बार सॉलिडिफिकेशन हो गया तभी भी इसका टेम्परेचर ज्यादा है। आप यहाँ भी डालोगे ना उसके ऊपर ये पानी, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। बट आफ्टर सम टाइम अराउंड 1000 डिग्री हो गया या 800 डिग्री हो गया, तब आप जाके पानी डालोगे तो आपको फिर फेस चेंज हो जाएगी, है ना। स्ट्रक्चर विल गेट ओके सर, ओके सर। सो इस तरह से, एंड इट इज नॉट सिंगल थिंग, है ना। और नॉर्मली 3-3, 4-4 एट ए टाइम बनते हैं। जैसे मैंने आपको स्पीड बोला 1 मीटर पर मिनट और 2 मीटर पर मिनट, तो आप सोचो कि 1 मीटर पर मिनट है, 160 बाय 165 है, 12 मीटर में हमारा ऑलमोस्ट 2.4 टन आया, है ना। तो 1 मीटर में अराउंड 200 किलो रहेगा। तो हर मिनट में आप सिर्फ 200 किलो ही निकालोगे आगे, और आपका पीछे का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है ना। जो हमारे रिफाइनिंग प्रोसेस है या बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग है, ये सब 1-1, 1.5 घंटे में लाके मटेरियल दे देंगे आपको 300 टन, 200 टन, तो आप उसको कैसे कर पाओगे? सो नंबर ऑफ ये जो रहते हैं ना, ये ज्यादा रहते हैं, है ना। कोई 4-4 का डिजाइन करता है, कहीं कहीं पे 8, कहीं कहीं पे 12 की भी लाइन दिख सकती है आपको। बड़े बड़े जो मिल्स होती है ना, उसमें तो ऐसे 12-12 चलती रहती है। उसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑल्सो यू शुड हैव सम स्पेयर ऑल्सो, क्योंकि अगर ये रुक गया तो पीछे की पूरी प्रोसेस रुक जाएगी आपकी। यू हैव नो ऑप्शन बट टू मेक द इनगॉट्स और सम कास्टिंग आउट ऑफ दैट स्टील। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना। जैसे पैटेंटिंग फर्नेस में होता है, अपने आगे का अगर वायर मिल ने मटेरियल लेना बंद कर दिया या यूज नहीं होना बंद हो गया, डेफिनेटली आपको फिर पैटेंटिंग फर्नेस बंद करनी पड़ सकती है। तो उसी तरह पे अगर कंटिन्यूस कास्टिंग मिल में प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो पीछे की पूरी प्रोसेस जो है, जो कंटिन्यूस है एक्चुअली, उसको इम्पैक्ट करेगा वो, है ना। सो ये हो गया कंटिन्यूस कास्टिंग के लिए। आई एम गोइंग टू शो यू 1 or 2 वीडियोज, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड जो प्रेजेंटेशन में अपलोड करूंगा उसमें आप एक वीडियो और एक दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, बट दैट वीडियो इज अ लिटिल बिट लॉन्गर, सो वी आर नॉट गोइंग टू सी इट हियर। इट इज ऑलमोस्ट 18 मिनट का वीडियो है वो। सो दिस वीडियो इज ऑफ 18 मिनट, so that it will be uploaded, that presentation will be uploaded, so you can access from there. If required, I will share this link to individual WhatsApp also. And there is one more YouTube video I have found on the induction furnace working. It's not that great, but definitely it will give you an idea how the induction furnace works. तो ये दोनों आप क्या करना, बाद में देख लेना, नीचे के दो। Now these are the small videos, we quickly go through that one. तो आपको आइडिया आ जाएगा कंटिन्यूस कास्टिंग कैसे होता है, ठीक है।
So when it starts, I will tell you. You have to just confirm me that yes, you people are able to see it. Just a minute. It's starting. The video is starting. It's 1 minute video. I have taken only small videos. You people are able to see. Can somebody please confirm me? Okay. Yes, sir. Okay. You might be not hearing the voice, huh? So what Okay, I sir. will do, not possible. After now you can see the water sprays here. Okay, these are the water sprays. These are what? These are the automatic gas burners. You can see when that particular length is reached, it is automatically cutting that one. So depending on the size, it can be called as billet, blooms, or it can be slab. तीन category है, billets, blooms and slab. This was one. I am starting another. Just a minute. I just try to. Okay, no, you will just. This is what? This is a ladle furnace. Ladle furnace, or you can say it will have the VD arrangement also. It can be RH furnace also. So here they are saying we are finally adjusting the chemistry, and now this ladle is being moved to the continuous caster. This is a rotating turret. The crane which is lifted it is having a capacity of 300 ton. Okay. Now what it is showing, it can have a closed
loop, or it can use a inert gas like argon to protect it from the oxidation. This is what you are seeing here, bluish, is a argon gas or any inert gas, and it is moving to the tun dish, and tun dish is having three. So, Yeah. so we can also have a halogen gas instead of argon gas. Halogen, I don't know. Maybe it depends. If it is a inert, it can be used. It's an inert gas. But at the same time, you have to see the availability. You have to see like the cost and industrial usage actually. So if it is abundantly available, it can be used. Okay. But normally people use the argon, maybe because of it is available easily or cheaper, something like that. Okay. Now this has a mold is made of copper, but it is cooled with water. Okay, the mold is made of copper plate, but it is cooled with the water. And apart from that, they have a magnetic stirring here also. They call EMS, that is electromagnetic stirring. This is to improve the solidification pattern. Electromagnetic stirring से क्या होगा? The temperature will be uniform and solidification will cause uniformly. This basically it's a vertical continuous casting machine, and it is not vertical and then transferred to this one, your horizontal bed. It's a continuously in the vertical, this only, vertical direction only. And the main purpose of EMS is that because what happens, there are chances of carbon segregation. पहले जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टरिंग में था और सॉलिडिफिकेशन पैटर्न अगर प्रॉपरली नहीं हुआ, तो देर आर चांसेस द कार्बन विल गेट सेग्रीगेटेड एट द सेंटर of the billet, and the same defect will carry over to the wire rod also, can be carried over to the wire rod also. This is cutting. Now it is coming to the rolling mill. Now there are certain integrated plants where this hot billet can directly go to the rolling mill also. There is no need of reheating in a furnace. It will directly go to the rolling mill. Okay, so this is one of the vertical type only, no horizontal. And what it happens when it goes there, and then it is tilted and sent to the horizontal platform.
Just now, just 1 minute. Another video is there. It's a small only. It's of 6 minutes, but we will not see complete. ये so they have this continuous casting machine supplied, Concast India supplied at Bhushan Power and Steel, Jharsuguda, Orissa. Here you can see actual operation. Still now you have seen only the animation. Okay, they call it curved bow type caster, है ना. ये जो रहता है ना, ये वहां जाके इनिशियल स्टेज में उसको खींच के लाता है. आपको दिखेगा आगे. कास्टिंग रेडियस कितना है उसका? 8 मीटर का कास्टिंग रेडियस है. नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हैं? वो 4 जगह पे रखे, उनमें 4 एट ए टाइम निकलेंगे. Ladle is having a capacity of 90 ton. So how much they can make? They can make of 125 millimeter to 200 millimeter by 200 millimeter तक वो बना सकते हैं. And it's normally a standard, 6 to 12 meter is a standard billet length is used in the industry. And this can produce 5 lakh ton per annum, means almost 40,000 ton per month. Okay. Sorry. This is basically a mold oscillation system that I have shown to you, है ना. तो कास्टिंग स्पीड कितना रहेगा उसके हिसाब से उसकी वो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस ठंडिश, है ना, जो रहती है उसको 1100 डिग्री तक उसको हीट करते हैं, प्रीहीटिंग. नाउ व्हाट इट इज एक्चुअली, इट इज अ डमी कास्टर, है ना. इनिशियली कैसे आएगा? तो इससे आएगा, डमी कास्टर से. तो देखो उसके अंदर जा रहा है इस तरह का पोर्शन.
ये है मोल्ड जो है ना, कॉपर मोल्ड का है वो. इट इज द कॉपर मोल्ड विद द वाटर कूलिंग. And this is the electromagnetic system for stirring the system. Now you see, this is the automatically cut. These are the automatically cut billet. Okay, so I will post, the link will be available. This link will be available in the presentation. You people please go through all the videos again, because the voice is there. You can easily understand what it is being said, and you can pause and play, so that to understand that function in a better way. And then there is a complete video of 18 minutes on the steel making. So you please people go through that also, whatever we have learned. So that 18 minutes video, it is covered almost, most of the things are covered. So now, because you have seen, you have learned small intricacies in the steel making also, that 18-minute video will be much easier for you to understand. Because in 18 minutes you cannot cover everything, but whatever they have covered, now you can correlate with the learning of your 1 week. Okay. Now section 2 is of wire rod, but now we already ended today's time. So tomorrow we will learn more about the wire rod. Till continuous casting, it's clear. And then wire rod production, we will see the complete flow. Then tomorrow we will cover the billet reheating. Some mills where you can have the continuous casting and rolling, you can do it rolling from whatever the coming from the in the hot condition, you can roll. If your plan is like that, everything is production plan and capacities are balanced that way, you can directly use that one. But if you have a offline wire rod mill, then what you have to do, you have to reheat it. Then we will see how the reheating takes place, various types of furnaces also, reheating furnaces, classification of reheating furnaces, that we will see tomorrow, and few more topics also we will include. So if there is any questions, any doubts on today's session, you people please ask. Any doubts on today's session? I hope continuous casting is clear to you people, how and why it is required, and also the various billets, bloom, and slabs, that intermediate products also you people are clear. If any doubt at all, you people can ask now.